गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सो आज का पहला टॉपिक हमारा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आपको पता है एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है अभी जो है वेलिंगटन में तमिलनाडु में। जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनका उनकी भी मृत्यु हो गई है, उनकी वाइफ की भी मृत्यु हो गई है और 11 और लोग हैं जो कि क्रैश होने की वजह से चॉपर के जो है जिनकी डिमाइस हो गया, जिनकी मौत हो गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है, क्या पोजीशन होती है। फिर जो हमारा चॉपर है MI-17V5, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या पोजीशन है। तो आपको याद होगा कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की थी ये पोजीशन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और हमारे जनरल बिपिन रावत जी जो है वो इंडिया के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। तो ये एक 4 स्टार जनरल रैंक की एक पोस्ट होती है जिसमें किसी भी आपके जो आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के जो सर्विस चीफ हैं उतनी ही जो है सैलरी और पर्क्स मिलते हैं। और ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही होते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का क्या फंक्शंस हैं ये भी देख लेते हैं। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके सारे अफेयर्स को डील करना। फिर जो है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हैं वो उनके जो है इश्यूज को एड्रेस करना। टेरिटोरियल आर्मी भी इन्हीं के अंडर आती है। फिर जो प्रोक्योरमेंट्स करनी होती हैं हमारी सर्विसेज की, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स कैपिटल एक्विजिशंस, मतलब जो बहुत बड़ी बहुत हैवी अमाउंट की जो कैपिटल एक्विजिशंस होती हैं वो नहीं करते डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। बट जो दूसरी छोटी प्रोक्योरमेंट्स हैं जो सर्विसेज की, वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अप्रूवल से ही होती हैं। ठीक है, अब जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को इसलिए बनाया गया था ताकि कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाए तीनों सर्विसेज के बीच में, और एक सिंगल पॉइंट एडवाइज़र बन जाए वो हमारी गवर्नमेंट के लिए, जैसे इंडिया के केस में प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है, तो एक तरह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसे आपको पता होगा अभी हमने डिस्कस भी किया था कि थिएटर कमांड्स बनाने की भी बात की जा रही है। तो वो प्रोजेक्ट भी जो है वो हमारे जनरल बिपिन रावत जी जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वही देख रहे थे। ठीक है, तो अब इसका बैकग्राउंड क्या है इस पोजीशन का। तो एक्चुअली जो है ये 2000 जो साल 2000 में कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी उसमें प्रपोजल आया था कि इंडिया का एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। फिर उसी प्रपोजल को जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जब एग्जामिन किया तो उन्होंने बोला कि एक 5 स्टार लेवल का रैंक का ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, फिर 2002 में उसी CDS को बनाने के लिए उनके लिए एक ऑफिस बना दिया गया। CDS की पोस्ट तो नहीं क्रिएट की गई, बट एक ऑफिस बना दिया गया इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का। ठीक है, बट वो ऑफिस ऑफ कोर्स क्योंकि CDS तो तब तक नहीं थे, CDS का सेक्रेटरीट बना दिया बट CDS नहीं बनाए थे। तो वो एक नेबुलस सा, मतलब जिसके डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, वो ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने नरेश चंद्र कमेटी बिठाई, तो उस कमेटी का ये सजेशन था कि ये 4 स्टार रैंक ऑफिसर होना चाहिए, और CDS जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स क्या हैं। तो ये रशियन मेड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जिसमें पर्सोनल को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कार्गो को भी किया जाता है, इक्विपमेंट को भी किया जाता है, और इसके अंदर जो है आर्म्स भी कैरी की जा सकती है, जैसे अनगाइडेड रॉकेट्स, कैनन्स या स्मॉल आर्म्स को भी कैरी किया जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है ये, और ये किसी भी जोग्राफिकल कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा जो है वो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कैसे ये क्रैश हो गया, क्योंकि ये बहुत एडवांस्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, आई एम सॉरी हेलीकॉप्टर है। तो इसलिए इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या रीज़न होगा कि किसकी वजह से जो है ये क्रैश हुआ है। ठीक है, फिर ये हेलीकॉप्टर जो है हाई ऑल्टीट्यूड और हॉट कंडीशंस में भी ऑपरेट कर सकता है। इसमें एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा है जिसके थ्रू ये जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है अपना चलता है ये। ठीक है, अब ये वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स है, MI-8 या 17 टाइप का। 2008 में हमने रशिया की रोसोबोरोनो एक्सपोर्ट को जो है ये ऑर्डर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और 2011 से लेकर 13 तक जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ था। फिर 12-13 में हमने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट किया और 71 ये हेलीकॉप्टर जो है वो हमने प्रोक्योर किए हैं। ठीक है, अब याद रखो कि यही वो हेलीकॉप्टर जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो
कई बार इसका यूज़ करते हैं, जैसे कभी किसी इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस में जाना हो तो इवन प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो इसी एयरक्राफ्ट में जो है वो इसी चॉपर में जो है वो जाते हैं, ठीक है। तो ये वीवीआईपीज़ को भी कैरी करता है ये हेलीकॉप्टर, इसके लिए ही अगर इसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं तो इन्वेस्टिगेशन से ऑफ कोर्स पता लगेगा वो तो, बट अगर इसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं तो बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे वीवीआईपीज़ के लिए भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है केन बेतवा इंटरलिंकिंग लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि वो फंडिंग देने को तैयार हैं, इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार हैं, केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके अंदर ये सबसे पहला प्रोजेक्ट बनेगा नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के लिए, ठीक है। ये हम प्लान भी देखेंगे कि ये प्लान क्या है, पहले हम थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। अब इसके अंदर केन रिवर का जो पानी है उसको बेटवा रिवर में ट्रांसफ़र किया जाने वाला है, जो कि दोनों ही ये रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि 10.62 लाख हेक्टेयर्स का लोगों को जो है वो आपके बुंदेलखंड वाले एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अबाउट 62 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिलेगी, और 103 मेगावाट की हाइड्रो पावर भी जनरेट की जा सकेगी इससे, ठीक है। अब क्या इसका खर्चा आएगा, तो यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि 44,000 प्लस का जो खर्चा आने वाला है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 39,000 जो है करोड़ रुपीस जो है वो देने वाली है, जिसमें 36,000 करोड़ जो है वो ग्रांट होगी और 3,000 करोड़ के आसपास जो है वो लोन होगा, ठीक है। तो ये लोन ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट जो है आपकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है ये ही ऑफ कोर्स इसको हैंडल करेंगी। कौन से रीजन को इससे बेनिफिट मिलने वाला है, तो बुंदेलखंड रीजन जो है, जो कि अब आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बुंदेलखंड रीजन में, वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पर बहुत ड्रॉट आता है, बहुत सूखा पड़ता है, तो इसलिए उस रीजन के लिए ही ये केन बेटवा प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया गया है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या इंडिया में पहले कभी कोई इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हुआ है, रिवर इंटरलिंकिंग? यस, पेरियार प्रोजेक्ट था 1895 में, फिर उसके बाद भी और सारे प्रोजेक्ट्स आए, परियम्बिकुलम, अलियार, जैसे बहुत फेमस आपको ये रावी ब्यास सतलुज प्रोजेक्ट भी पता होगा। तो ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इंडिया में जो है वो एनविसेज कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का क्या बैकग्राउंड है इंडिया में। तो 1970 में उस टाइम जो यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर थे डॉक्टर के.एल. राव, उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो है डॉक्टर राव ने नेशनल वाटर ग्रिड बनाने की बात की, ताकि जिस एरिया में ज़्यादा पानी है वहाँ से उस पानी को ट्रांसफ़र करके उस ऐसे एरिया में डालो जहाँ पर वाटर की डेफिशिट है, ठीक है। फिर कैप्टन दिनशॉ दस्तूर जी थे, उन्होंने गारलैंड कनाल बनाने की बात की, मतलब एक ऐसी गारलैंड कनाल बनाओ जिसमें कि यही आप कर सकते हो कि वाटर रिच एरियाज से जो है वो पानी को ट्रांसफ़र करके वाटर डेफिशिट एरिया में डाल दो, ठीक है। फिर 1980 में वो टाइम आया जब हमने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया, ठीक है। यही नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर ये केन बेटवा प्रोजेक्ट भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। इस प्लान में ये सोचा गया कि 16 पेनिनसुलर रिवर्स और 14 हिमालयन रिवर्स जो हैं इनको पहले आपस में कनेक्ट किया जाएगा, और फिर इन दोनों को, पेनिनसुलर रिवर्स को और हिमालयन रिवर्स को भी आप जो है वो जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जो भी रिवर अगर कोई सूखी है या कोई जो है पेरेनियल नहीं है, मतलब जो पूरे साल पानी जिसमें नहीं रहता, तो उसमें वो है पानी आ जाएगा, और ये वाटर सरप्लस जो रीजन से हम वाटर डेफिशिट रीजन में पानी ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने गवर्नमेंट को बोला कि हमको और टाइम चाहिए इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है और टाइम दे दिया, 2024 तक का टाइम दे दिया रादर, और कहा है कि जो रिमेनिंग 155.75 लाख ऑलमोस्ट, मतलब कितने हुए ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर के जो घर जो भी नहीं बने हैं उनको आप कंप्लीट करो, और उसके ताकि हम जो हमारा टोटल टारगेट है 2 करोड़ 95 लाख घर बनाने का वो हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो इसके लिए मार्च 2021 की से लेके जो है मार्च 2024 तक का टाइम दिया गया है, और इसके लिए 2,17,000 करोड़ के आसपास का जो है वो बजट भी जो है वो लगेगा, ताकि पूरे घर कंप्लीट हो जाए रूरल एरियाज में। अभी तक हमने 2.95 करोड़ में से सिर्फ 1.65 करोड़ घर बनाए हैं।
इसलिए बाकी जो घर हैं वो बनाने ज़रूरी हैं, तो वो 2024 तक बनाए जाएंगे, ठीक है। अब इस प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी देखते हैं, ग्रामीण। तो ये इंदिरा आवास योजना थी, उसी को ही रिप्लेस कर रही है। इसको 2016 में लाया गया ताकि आप पक्के हाउस दे सकें, गवर्नमेंट पक्के हाउस दे सकें, जिसमें बेसिक एमेनिटीज़ हैं सारी रूरल फैमिली, जो रूरल फैमिलीज, एलिजिबल रूरल फैमिलीज़ को, जो कि आपकी कच्चे घर में रह रही हैं, तो उनके लिए ये घर बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर SC STs, फ्री बॉन्डेड लेबर या नॉन SC ST कैटेगरी के विडोज़, या फिर डिफेंस पर्सोनल के जो है फैमिली मेंबर्स, या रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिसेबल्ड पर्सन्स या माइनॉरिटीज़, ये सब एलिजिबल हैं, इनको ये घर दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो स्कीम है आपकी, ये दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर बाकी हर जगह पर इंप्लीमेंट की जा रही है, बाकी हर स्टेट में इंप्लीमेंट की जा रही है। बेनिफिशरीज कैसे आइडेंटिफाई किए गए हैं? सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा उठाया गया है, और उसमें ग्राम सभा जो है वो वेरीफाई करेगी कि ये पर्सन जो है वो एलिजिबल है या नहीं, उसी के बेसिस पर जो है ये घर अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। अब 1,20,000 रुपए जो है अलाउंस प्लेन एरियाज में, और 1,30,000 अलाउंस हिली एरिया में प्रोवाइड किया जाएगा। 25 स्क्वायर मीटर तक के घर जो है वो बनाने की बात की जा रही है, जिसमें हाइजीनिक कुकिंग का भी एक, मतलब एक तरह से किचन का भी एरिया देने की बात है, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शनल फीचर ये भी है कि 70,000 रुपये तक का आप लोन जो है वो आप ले सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट हेल्प करेगी आपको वो लोन लेने में, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है एम्बरग्रिस। तो एम्बरग्रिस जो है आपकी, जिसको वेल वॉमिट भी कहते हैं, बट वो बहुत ही महंगी होती है, तो उसको कुछ लोग जो है वो स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए हैं पुणे में, और उसको जो है 550 ग्राम जो है एम्बरग्रिस पुणे की क्राइम ब्रांच ने जो है वो सीज कर लिया, ठीक है। तो एम्बरग्रिस जो है इसको वेल वॉमिट कहते हैं, क्योंकि जो है वेल, हमारी स्पर्म वेल जो है वो बहुत सारी स्क्विड बीक्स खाती है, मतलब जो है आपके जो है एनिमल्स होते हैं, जो आपके मरीन एनिमल्स, उनको खाती है। तो जब वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है उनके जो है आपके उनके गट में, और वो जब एक्सक्रीट करने लगती है, एक्सक्रीट जब वो प्रॉपरली ऑफकोर्स नहीं करती है, तब वो उनके जो है गट में ये एम्बरग्रिस बनता है, ठीक है, जिसको वो वॉमिट कर देती है, ठीक है। तो ये एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस है, जिसका बहुत यूज़ किया जाता है, इसलिए ये बहुत महंगा होता है, ठीक है। मतलब 1 किलो एम्बरग्रिस जो है वो 1 करोड़ रुपए तक की इंटरनेशनल मार्केट में बिकती है। इसको फ्लोटिंग गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी जो है परफ्यूम मार्केट में या फ्रेग्रेंसेस क्रिएट करने में इसका बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको इसलिए क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसका कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए उसको स्मगलर्स जो हैं वो बहुत जो है वो प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो अब कोस्ट लाइन जो है गुजरात में आपकी, इसको ऑफ कोर्स यस कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। अब जो है आपके जो स्मगलर्स हैं वो गुजरात पे क्या करते हैं कि अगर वो जो स्पर्म वेल है उसको जानबूझकर मार के उसके पेट में से भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज है स्पर्म वेल, तो ये इलीगल है ये काम। इसके लिए ही जो है गवर्नमेंट जो है या पुलिस एजेंसीज जो है आपकी, वो नज़र रखती हैं कि कोई स्मगलर्स जो है ऐसा कार्य ना करें, ठीक है। एम्बरग्रिस जो है वो सिर्फ 1% ऑफ स्पर्म वेल्स बनाती हैं। तो देखो कि जो स्मगलर्स हैं उन्हें तो ये पता नहीं होता कि कौन सी स्पर्म वेल इसको प्रोड्यूस करती है और नहीं, तो वो उसके चक्कर में जो है बहुत सारी स्पर्म वेल्स को मार डालते हैं, जबकि उनको वो एम्बरग्रिस मिलता भी नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है LCRD। तो LCRD जो है वो नासा का एक लेज़र कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम है, जो कि लेज़र कम्युनिकेशन सिस्टम बनेगा नासा का सबसे पहला, ठीक है। अब इसमें क्या है, अभी तक ये नासा जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन का यूज़ करता आ रहा है, लेकिन जब लेज़र कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाएगा तो ये बहुत फास्ट है, ऑलमोस्ट 10 से 100 टाइम्स ये फास्ट होगा। और इसमें सारा जो डिजिटल डेटा है उसको लेज़र सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाएगा और ट्रांसमिट किया जाएगा वाया बीम्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब ऑलमोस्ट अगर समझ लो मार्स से अर्थ के ऊपर कोई डेटा भेजना है, तो अगर उसमें 9 हफ्ते लगते हैं, तो इस लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू, LCRD टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो सारा डेटा सिर्फ 9 दिन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। LCRD जो है वो 1.2 GB पर सेकंड की स्पीड पर डेटा भेज सकता है, ठीक है। इसके और भी बहुत एडवांटेजेस हैं, जैसे कि बहुत स्मॉल होता है इसका जो सिस्टम होता है वो साइज़ में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब बहुत स्मॉल है तो आप और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हो अपने स्पेसक्राफ्ट में, क्योंकि इसने तो बहुत कम जगह घेरी है। फिर इसका वेट भी कम है, तो वेट कम है तो आपको जो है वो लॉन्च भी लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि उतना फ्यूल कम लगेगा अगर कल कम वेट वाला सामान ऊपर आप भेजोगे तो, ठीक है। लेस पावर भी ये लेता है एज कम्पेयर टू रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम्स। जब ये लेस पावर लेगा तो आपकी बैटरीज जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल पाएंगी, क्योंकि उसको कम ड्रेन करेगा ये, ठीक है। तो इसके बहुत सारे और भी एडवांटेजेस हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है
स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। तो मिनिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने फेलिसिटेट किया है, और जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के जो विनर्स हैं उनको फेलिसिटेट किया है, ठीक है। तो ये चैलेंज आपको याद होगा कि अगस्त 2020 में, आई थिंक थर्ड वीक का टाइम है, हमने इसको डिस्कस भी किया था, तो ये तब इसको लॉन्च किया गया था। आईआईटी मद्रास और सीडैक ने दो माइक्रो प्रोसेसर्स बनाए, शक्ति और वेगा नाम के। अब जो है सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया गया एक चैलेंज कि आप इन माइक्रो प्रोसेसर्स को जो है वो यूज़ करके कौन से टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बना सकते हो, ये जो है ये चैलेंज रखा गया, ठीक है। अब जो है इसमें कंटेस्टेंट्स को कहा कि इस स्वदेशी प्रोसेसर्स को आप और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ इससे, इन प्रोसेसर से, जिससे सोसाइटी की नीड्स को पूरा किया जा सके, ठीक है। इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया, 4 करोड़ के आसपास का जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है प्रोवाइड किया गया, जो कि पार्टिसिपेंट्स को दिया गया, ताकि वो अपनी हुनर को दिखा सकें कि वो क्या क्या इन प्रोसेसर से कर सकते हैं, ठीक है। अब 10 महीने का ये एक तरह से चैलेंज था। जून तो 2021 में ये चैलेंज खत्म हुआ है, और इसके ही बेसिस पर ये विनर्स को फेलिसिटेट किया जा रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Chief of Defense Staff. So you all may be knowing that we have had a very unfortunate incident in Tamil Nadu where this Mi-17 V5 chopper was crashed, and we lost our Chief of Defense Staff and his wife along with other 11 persons who were on board with this on this chopper, and they have died in this incident. So we have to see what is the position of Chief of Defense Staff and what is this IAF chopper Mi-17 V5. Okay, so this Union Cabinet had approved this position of Chief of Defense Staff, which is a 4-rank Star General, and his salary and perks are equivalent to that of a service chief. Okay, so he also heads the Department of Military Affairs. Several other areas are handled by the Department of Military Affairs, which is of course headed by the CDS. So the armed forces, so any coordination activity or any harmonious synergy between these three armed forces is dealt by this Department of Military Affairs. Integrated headquarters of the Ministry of Defense is also handled by this Department of Military Affairs. So this territorial army also falls under the domain of Department of Military Affairs, and any procurement which is exclusive to the services, except of course the capital acquisition for the services, is also dealt by the Department of Military Affairs. So it is basically a one-point source for the government or the political executive, or let's say the Prime Minister, to deal with all the affairs of our defense forces. Okay, so this Chief of Defense Staff was basically created as a high military officer to oversee and coordinate the working of the three services, so that seamless tri-service views and can be taken. And this CDS also acted as the single point advisor to the executive, that in our case, in India's case, that is the Prime Minister. Okay, so also let us also see the background of this particular position. So this first proposal for a CDS came up in 2000 Kargil Review Committee, and the group of ministers task force which was studying this report, they recommended that the CDS should be a 5-star officer. Okay, and to prepare for this position of CDS, the government created this integrated defense staff in 2002, which was eventually to serve as the CDS secretariat. But of course, that department remained just a department on papers. It had no actual relevance because CDS was not created. In 2011, UPA government set up this Naresh Chandra Committee on Defense and Security. It also recommended that CDS is an important position and it should be a rank of 4-star officer. Okay, so this position was created just in 2020 when the Prime Minister announced that the government is willing to create this position, and on his Independence Day speech he announced this creation of CDS soon. And I think at the end of 2020, General Bipin Rawat became the first CDS of India. Okay,
So now let us also see about the Mi-17 V5 helicopters. So they are of course Russian-made military transport helicopters, and they are designed to carry personnel, cargo, and equipment. They can also carry arms like unguided rockets, cannons, and small arms. So it is one of the most advanced military transports which is operable in any geographical condition. So that's why, because it's very advanced, it has been argued that what could be the reason behind this crash of aircraft, which was this chopper which was carrying CDS Bipin Rawat ji. And there must be, of course, an investigation, because even the Prime Minister also sometimes travels through this particular helicopter. Okay. So anyways, this helicopter can also be operated in high altitudes and hot conditions. So it also uses a satellite navigation system, so that it has a high accuracy in traveling. So it is also the most technically advanced helicopters of Mi-8 Ya-17 type, which has been built by the Russian company Rosoboronexport. So in 2008 we signed a contract with Russia for the delivery of these helicopters, and they were delivered between 2011 to 2013, and in 2012-13 we also signed contracts for further supply of 71 such helicopters to meet the needs of Indian Air Force. Okay, so now let us see the next topic, which is Ken-Betwa interlinking project. So recently Union Cabinet has approved the funding and implementation of this project. So it is the first project under the National Perspective Plan for interlinking of rivers. So before seeing what this National Perspective Plan is, let us see what this particular Ken-Betwa link project is. Okay, so this project basically aims to transfer water from Ken River to Betwa River. So both are tributaries of Yamuna River, and once this project will be completed, it will provide annual irrigation of about 10.62 lakh hectares of land, and drinking water supply to about 62 lakh people, and it will also generate 103 megawatts of hydropower. Okay, so the union government has said that almost 44,000 crore rupees will be spent for the development of this project. So this Ken-Betwa link project lies in Bundelkhand region, which is a drought-prone region which has about 13 districts falling under Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. So this because this region is drought prone, so it is important that water surplus river of Ken, the water from the water surplus river of Ken is transferred to the water deficit river of Betwa. That's why this project has been envisaged. Okay, so it will be giving immense benefits to the water starved region of Bundelkhand. So there are several districts like Panna, etc. So even Panna Tiger Reserve, certain areas of Panna Tiger Reserve will also be submerged, but of course it has to happen because this project is very important. So is there any previous example of river linking in river water linking in India? Yes, there has been some examples like Periyar project, in which the water from Periyar basin was transferred to Vegi basin. It was commissioned in 1895. Certain other projects are also there, like Parimbukulam Aliyar, Kurnool Kudappa Canal, Telugu Ganga project, and Ravi Byas Satluj. Okay, of course they have not been successful. So now this national perspective plan on interlinking of rivers is being undertaken, and Ken-Betwa project is the first project in this. Okay, so in 90, let us see the background of this interlinking of rivers project in India. So in 1970s, the then Union Irrigation Minister Dr. K.L. Rao envisioned this project, that there should be a national water grid, and from which we can transfer water from water rich areas to water deficit areas. Captain Dinshaw Dastoor also proposed a Garland Canal. So basically it was also a vision in which redistribution from water from one area to another was to happen. But only in August 1980, the Ministry of Irrigation proposed this National Perspective Plan for water resources, and it was about transferring interbasin water in the country. So this project was basically envisaging that the 14 Himalayan rivers, they will be first interlinked, and then the 16 peninsular rivers, they will be interlinked, and then these two peninsular rivers and Himalayan rivers will be interlinked with each other. Okay, so what would happen with that? Any river which is not perennial, which is
water scarce will be having water after the completion of this project, because all these rivers will be interlinked. Okay, so now let us see the next topic, which is Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen. Okay, so the Union Cabinet has recently approved the proposal of Department of Rural Development that this PMAYG scheme must be extended beyond March 2021, because the scheme has not been able to perform as per expectation. So the target was to create almost 2.95 crore houses, but until 2021, 1.65 crore houses were constructed only. Okay, so now the Union Cabinet has decided that this scheme will be extended until March 2024. Extra funds like of about 2 lakh 17,000 crore will be required to construct the remaining 1 crore 5 1 crore 55 lakh houses, and this will be required to create to achieve the target of 2.95 crore houses in rural areas. Okay, so let us see something about this scheme also. So this scheme, Pradhan Mantri Awas Yojana, has replaced the Indira Awas Yojana, and in this scheme was launched in April 2016. So it aimed to provide pakka house with basic amenities to all rural families who are homeless or who are living in kacha or dilapidated houses. So the target was initially to complete this project by March 2022, but of course it has not been done. That's why it has been given an extension. So the beneficiaries of this particular project or this scheme included people belonging to SC/ST community, freed bonded laborers, non-SC/ST category people involved, widows of or next of kin of defense personnel, ex-servicemen, retired members of paramilitary forces, disabled people, and minorities. Okay, so this scheme is being implemented in all the states except Delhi and Chandigarh, because it was realized that there are not enough rural areas in these two locations. Okay, so the beneficiaries are being identified from the socio-economic caste census data of 2011. Of course, there are certain exclusions too, and Gram Sabha needs to verify these beneficiaries. Okay, so about 1,20,000 of allowance is given to the beneficiaries in plain areas, and 1,30,000 is given to the beneficiaries in hilly areas, so that construction of about 20 of a house of about 25 square meter can be done. It will also have a dedicated area of hygienic cooking, that is a kitchen, and there is also an optional component in which the person or the owner of the house can avail a loan of about 70,000 for the construction of house. Okay, so now let us see the next topic, which is ambergris. So a crime branch of Pimpri Chinchwad police has arrested two people in Pune and seized about 550 grams of ambergris. So it is also known as the floating gold. Okay, so it is basically whale vomit, because what sperm whale eats, that is squeak beaks in a day, because once it gets converted in the intestines of a whale, it becomes ambergris. Okay, because it stays in the gut of or the stomach of the sperm whale, it does not get excreted, so it is a semi digested, so some people call it a semi digested dung or poop. Okay, so it is a solid waxy substance. It is very costly. 1 kg of ambergris is just about 1 crore rupees. It is extensively used in the perfume market, especially to create fragrances like musk. It is also used in some traditional medicines. Because of its value, the smugglers often target these sperm whales. In India, on the coastline of Gujarat, several smugglers have been arrested time and again, who have been trying to kill this sperm whale to obtain this valuable ambergris. But little do they know that this ambergris is only produced by just 1% of sperm whales. So just imagine they kill any sperm whale that they see, without realizing the fact that only 1% of sperm whale are able to produce this ambergris. Okay, so now let us see the next topic, which is LCRD. So LCRD is basically a new communication system, that is the laser communications relay demonstration. So it will be the first ever laser communication system developed by NASA. It will help the agency to test its optical communication in space. So NASA currently uses radio frequency communications to send data, but it is quite
slow. That's why this LCRD will be able to increase the bandwidth to 10 about by about 10 to 100 times. So it has two optical terminals. So one would receive data from a user spacecraft, and the other would transmit data to ground stations which is present on the which are present on the earth. Okay, so this will basically translate digital data into laser signals, and these laser signals will be transmitted via encoded beams of light to the earth. And just to give you an impression of how fast it would be, so currently it takes about 9 weeks to transmit a completed map of Mars back to Earth with the current radio frequency systems. But with laser systems, this speed can be accelerated to about 9 days. Okay, so LCRD transmits about 1.2 gigabits of data per second to the Earth. Okay, so that's why it's very fast. So there are several other advantages also. So it is very small in size, it has a low weight, it has requires less power. So what it means, smaller size means that it will give more room for other science instruments to be installed on the spacecraft. Less weight means that it will take less fuel to transport this, so it will make the launch less expensive. Less power means that spacecraft's batteries will be less drained. Okay, so it will extend the life of the spacecraft battery. So it has extensive advantages over the currently used radio frequency systems. Okay, so now let us see the next topic, which is Swadeshi microprocessor challenge. So this is basically a challenge which was launched by the Ministry of Electronics and Information Technology in August 2020, and now the winners have been felicitated. This challenge was about this challenge. Let us see about this challenge also. So IIT Madras and CDAC, they both created or developed this two Swadeshi microprocessors, namely Shakti and Vega. And this challenge was to basically invite innovators, startups, and students to use these microprocessors in developing various technological products. Okay, so this challenge was open to all students at all levels and startups, and the challenge was demanding that not just this any tinkering with this Swadeshi processors will be done, but if you can uh, create new innovative products for the solution of societal needs, it will be appreciated. And now this even this scheme or this challenge had a component of financial support which was given by the ministry to the tune of about 4.3 crore rupees. And after a spread of over 10 months, the winners have been decided in June 2021, and now these winners have been felicitated. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.